Hello. 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 Good morning, sir. Yeah, good morning to all of you. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll wait for 2 minutes, then we'll start. Okay. Okay. Good morning, students. So today is my first interaction with you all. So let me introduce myself. I'm new for you. Myself is Dhananjay Shukla. So I'm going to teach you this semester this design of machine elements. Okay. As this is the first lecture today, so we'll just discuss some uh, general concepts about designing of bolted connections, riveted connections, uh, welded connections, uh, whatever the topics are included in module number 4 and 5. We'll just go through that, and I will include all those topics as a part of general discussions. Okay. Can you see my screen? Just any one of you can confirm. Hello. Yes, sir. Okay. So to begin with, see, as you might aware, in the this is not the first design of machine elements. I think first lecture
Dr. Atul Dhale sir has started. Okay, so उन्होंने आपको बेसिक कुछ लास्ट टाइम में बताया होगा आई थिंक. ओके, सो आई कंसिडर कि आपको बेसिक्स थोड़ा पता होगा, एंड विथ दैट लेट मी फर्स्ट okay. So see here, I am going to take the following topics. Okay, I hope you can see this screen is visible to all of you, I hope. Just a moment. This is first time you have this subject ना, design subject. इसके पहले नहीं था ना आपको previous semesters में. Hello, hello, can you all hear me? Okay, whether I am audible now? Hello, please confirm. Hello. Hello, sir. Yes, am I audible? Sir, you are audible, but can you speak a little bit louder, sir, so we can hear you properly? Okay, Yes, not- sir. Okay, fine, not an issue. Just let me know, okay, if voice is not available to you, then let me know, okay. Now is it fine? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now see, these are the topics I'm going to cover in my throughout this semester. First, I will cover the bolted joints. Second, I will cover the riveted joints. Actually, this is nothing but integrated part actually. Okay, this comes under your model 4, and the weightage assigned to this topic is almost 18% of the whole. Okay, then next is your welded joints, and along with this we have a design of springs. Okay, again we have in this helical springs, leaf springs. Okay, this comes under model 5, and almost 19 to 20% of the weightage is assigned to this. Okay, so overall if you see, these are the topics I am going to cover. Okay, model 4 and model 5. Okay, this is our overall idea. Okay, so to begin with, we will today discuss some concepts about these bolted joints. Okay, so let me first take you to the now coming to the joints as we are going to discuss. Okay, hello, am I audible now? Sir, you are still bit not audible. Your voice is low. So can you speak close to the mic? Yes, sir. Please. Okay, fine.
एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड वेट करो। अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. sir. It's still slow. अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है, एक मिनट। सर शायद आपका माइक्रोफोन का वॉइस कम रहेगा। अभी अभी देखो। सर अभी भी कम ही है आपका आवाज। एक मिनट। सर स्पीकर का नहीं, आपके माइक्रोफोन का चेक करो, बाय मिस्टेक वो कम हो गया रहेगा। आवाज तो यहाँ पे बराबर है। सर डिवाइस सेटिंग्स इसमें है क्या? खुल है ना इसमें तो? हाँ अभी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। सर स्टिल नॉट दैट मच ऑडिबल सर, वेरी लो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी चेक करो, आ रहा है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. अभी आ रहा है क्या बराबर? Sir, still not that सर much सेम audible. ही है, पहले जितना था उतना ही आवाज आ रहा है। सर इट इज वेरी हशी। और अभी यहाँ पे तो सब बराबर है सेटिंग। एक सेकेंड। कैन यू टेल मी नाउ, इज इट ओके फाइन? अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो। सर सेम ही है पहले जितना।
अभी आया क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी बराबर है ना? ओके, तो ठीक है, अभी ओके। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा आप। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो here now we are going to start with the joints. तो आपने पहले भी सुना होगा joints क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, joint is nothing but actually to connect the two members. Okay, two members. Okay, that members may be similar of similar nature or of dissimilar. Okay, I mean here similar and dissimilar means regarding the material. Okay, and the configurations. Okay, so here now if you consider the types of joints, there are several types of joints. Okay, out of that we are going to consider those joints. Okay, those joints which are nothing but applied against the force. Okay, in a order to withstand that force. Okay, and this type of joints are called as mechanical joints. Okay, mechanical joints. Are you getting me? Those type of joints are called as mechanical joints. So actually, if you see mechanical joints in simple word, if I say, is nothing but joint. Why it is called mechanical? See here, mechanical. It is because it is applied against the force. Okay, therefore it is called a mechanical joints. Okay, so now these mechanical joints are further classified into two different categories. One is the permanent. Okay, permanent joints. Second is non-permanent, or you can say the temporary joints. Okay, non-permanent or temporary. Okay, or you can also call this as a detachable. Okay, is it okay? Audible to everyone? Hello. Yes, sir. Now, if you consider the example, then you will get a more clear idea about this. Okay, what is mean by this permanent joint and एक second. So if I say the permanent joints, okay, if I say the permanent joint, so what does it mean? The permanent joint means the definition itself says the joint which cannot be disassembled without damaging the parts. Okay, or you can say the joint which can be opened or disassembled by breaking or damaging the joint. Okay. So the joints which can be opened only. Okay, only means there is only one way. Okay, so there is no alternative. तो अगर आपको उसको ओपन करना है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा या डैमेज करना पड़ेगा, फिर से नया पूरा ये करना पड़ेगा. ओके, तो बाय ब्रेकिंग और डैमेजिंग.
So please try to understand this very carefully, okay? Before starting the actual joints, you should know about this, okay? Under which category a particular joints falls. Okay? For example, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो आपका जैसे कि आपने देखा भी होगा रेलवे ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं नॉर्मली, ओके, वहाँ पे आपने देखे होंगे जो मेंबर्स रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, ट्रस्ट मेंबर्स रहते हैं. हैव यू ऑब्जर्व दैट? हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट? हेलो. तो जो नॉर्मली हम रूफ ट्रस्ट भी बोल सकते हैं, ओके, और रेलवे ब्रिज ट्रस्ट बोल सकते हैं. वहाँ पे जो आपने पार्ट्स देखे होंगे, जो मेंबर्स देखे होंगे, दे आर कनेक्टेड बाय अ जॉइंट्स, एंड दिस जॉइंट्स आर नथिंग बट रिवेटेड जॉइंट्स. रिवेटेड और अगर बोल्टेड की बात करूँ तो इसके डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ओके. तो डिज़ाइन प्रोसीजर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट जॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट्स में काफ़ी अंतर है, ठीक है. तो रिवेटेड जॉइंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ परमानेंट जॉइंट, ओके. ये एक एग्जांपल हो गया, ओके. आपने देखा होगा ऐसे कुछ मेंबर्स, ठीक है, ठीक है, ऐसे रिवेट्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रिवेट्स रहते हैं, लगे होते हैं उसमें, ठीक है. हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट? तो आपने देखा होगा. देन अगर मैं बात करूँ वेल्डेड, ये तो सबको पता होगा, वेल्डेड जॉइंट्स आपके घरों में वेल्डिंग वगैरह यूज़ होता होगा, ठीक है. जो आपने कभी देखा होगा अगर कोई मेंबर्स, कोई पार्ट ये होता है जब डिस्कनेक्ट होता है तो हम कभी कभी उसको वेल्डिंग कराने के लिए ये कराते हैं, ले जाते हैं, तो दैट वेल्डेड जॉइंट्स. तो अगर वेल्डिंग उसको कराया, समझो ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, दिस टू मेंबर्स, ओके, और इसको कनेक्ट करना है, तो देयर इज अनदर वे कि मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में वेल्डिंग लगा दूंगा, ठीक है. तो ये वेल्डिंग जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को पकड़ देगा, कनेक्ट कर देगा. अब ये वेल्डिंग प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे किया जाता है, these all details is comes under different subject, ओके. तो ये पूरा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है. फिर भी हम जब ये डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया बताएंगे, ओके. सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है ये दो मेंबर का, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास और भी रास्ता है. जैसे कि मैंने आपको ये बताया था रिलेटेड, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कैप बिठाया जाता है और उसको दोनों कैप की मदद से यहाँ पे एक रिवेट लगा दिया जाता है, ठीक है. ये इसको पकड़ देता है. तो कैप डबल कैप भी हो सकता है, सिंगल कैप भी हो सकता है, ठीक है. आर यू गेटिंग मी? हेलो. So these are the different ways by which we can connect the two members, okay. So depending on that, whether that joint which is formed after connecting the two members is permanent or temporary, okay, we use the particular what procedure to design that, okay. Basically अगर आप डिजाइन अगर हम डिजाइन देखें तो क्या है, इन सिंपल, ये आपको समझ में आया परमानेंट जॉइंट्स क्या होता है? कोई और एग्जांपल बता सकते हो आप परमानेंट जॉइंट्स का? एनीवन? हेलो. दो मैंने बताया आपको, रिलेटेड, वेल्डेड. एनी अदर एग्जांपल? हैव यू एवर सीन? कोई और ऐसा एग्जांपल है जो आपके माइंड में आ रहा है? हेलो. 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 कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो कौन सा एग्जांपल आप बता सकते हो मुझे अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेटेड और वेल्डेड? और कोई सुना है ऐसा एग्जांपल जो आपने देखा है जो परमानेंट जॉइंट्स हो सकता है? आपने ये सुना है कभी सोल्डरिंग वगैरह, सोल्डरिंग? Yes, sir. हाँ, ये किस में आता है? Can I call it as a permanent joint?
Can you call it as a permanent joint? Yes, sir. Yes, sir. Is it similar to welding or is it different? Of course, this is not the question of this subject. This is not concerned here, but basically if you classify, तो ये सब जो है आपका इसमें जो आता है परमानेंट में आता है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. ठीक है. Then next category is what? The temporary joints. Okay. Temporary joints means क्या होता है कि आपका इसमें ये joints जो है आप एक बार समझो दो मेंबर्स को आपने कनेक्ट किया बाय द यूज ऑफ दिस मींस ऐसा जॉइंट्स आपने बनाया समझो ये दो मेंबर्स कनेक्ट किए गए हैं. ओके. और यहाँ पे कोई भी जॉइंट फॉर्म होता है अगर. ओके. तो ये जो जॉइंट्स है you can disassemble this, okay, without damaging. Means you can open it, okay, without damaging the joints. मतलब आपको ये जो joints है इसको damage नहीं करना पड़ेगा. Without destroying it, you can disassemble and use it whenever it is required. Okay. So whenever it is required to separate these two members, we can separate this, okay, from one another. So just remove the यहाँ पे जो भी आपने यूज़ किया होगा. सपोज आपने यहाँ पे फास्ट ट्रेनर्स यूज़ किया है. ठीक. तो फास्ट ट्रेनर्स यहाँ से निकालोगे और वो क्या हो जाएगा आपका रिमूव मीन्स दोनों अलग अलग हो जाएगा. ठीक है. तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल अंडर दिस कैटेगरी इज नथिंग बट फास्ट ट्रेनर्स लाइक योर bolts, nuts, screws, okay, and etc. Are you getting me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So these bolts, nuts, screws. Okay. See now, bolt, nuts, screws. This all falls under the category of temporary joints. Okay. So I hope now it is very clear to you. अभी मैंने कुछ देर पहले लिस्ट डाउन किया था. क्या क्या लिस्ट डाउन किया था? Riveted joints, फिर bolted joints, फिर welded joints. तो इसमें से अभी आप आसानी से क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन सा परमानेंट है कौन सा टेम्पररी है. ओके. So today we will discuss some aspects regarding this bolted joints. Okay. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर चांस है पूछने को as per as your syllabus is concerned. Okay, but इसका डिजाइन प्रोसीजर जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. So we will go through that in a slight faster way. Okay, means हम उसको just go through जैसा करेंगे. Okay, not इसको आपको समझना is of course important because the similar design procedure you have to adopt here for related joints. Okay, so both are important actually. Okay, तो आपको सिर्फ क्या करना है bolted joints अगर आपको पता है कैसे डिजाइन करना है तो you can design the related joints. Okay, just by replacing one part that is bolt by rivets. Okay, so let us see. So today we will be having discussion on the bolted joints. Any question up to here you want to ask? Hello. Hello. Are you there? Hello students, are you there? No doubt, sir. No doubt, sir. Yeah, fine. Now, if we talk about this bolted joint already I said this is a temporary joint. Okay. After this, the next important point, it is nothing but a type of threaded joints.
It is nothing but a type of threaded joint. What do you mean by threaded joints? Threaded joint means इसमें क्या होता है? The joints will be formed with the help of two members. Okay, let us say this is member 1. Let us call this as a member 1, and there will be another member. Let us call this as member 2. Are you getting? Now, what will happen here? These are called as here. This we can call it together as a fundamental member. Fundamental member to form this joint. Okay, fundamental member to form this joint. So fundamental member to form this joint is here this member 1, okay, and this member 2, and both the members are having some kind of threads, two threads. Okay, what? Screw threads. The only difference will be that the member 1 means one of the member will have external threading on around its body, okay, external, and one of it will be having a internal threading along its shank or body. Okay. I will let you know what is in the shank and body later. Okay, जब मैं बताऊंगा तो इसमें ये ऐसा होता है थ्रेडिंग कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग होगा एक मेंबर के ऊपर वो दूसरे वाले के इंटरनल थ्रेडिंग में बराबर जाके फिट हो जाता है. Okay, now since both the members are having some kind of screw threading, therefore here we can call it as the fundamental member is what? A threaded member, and that's why this is nothing but a type of threaded joint. Means the joints can be formed only with the help of a threaded fundamental member. Okay, so this member which is having external thread is nothing but called as the bolt. Okay, आपने bolt देखा ही होगा. Okay, then the member 2 which is having an internal thread is called as a nut. Okay, and they fit on each other. Okay, they fit on each other by applying a tightening force. Okay, by applying a tightening force. Now see, यहाँ पे समझो ये आपका नट है, ठीक है, सॉरी बोल्ट है. तो ये आप जो देख रहे हो ठीक है, यहाँ पे जस्ट मोमेंट. Just give me a moment. Yeah. So now see, whatever you are looking here, this is nothing but a bolt, and here we will have and this is nothing but a bolt के केस में this is nothing but the head of the bolt. This is a shank, or we call it as a body of the body part of the bolt. Out of this, some part will be threaded. Okay, will having a external threading on it. Okay, and some will be a plain part. That means regular. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे अगर दिखाना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. यहाँ पे देखिए, okay. आप देख सकते हो यहाँ पे. हेलो, कैन यू सी दिस डायग्राम? तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये जो है ये बोल्ट का क्या है,
This is what here you can see. This is what the head of the bolt. Okay, head part. This you can see. ये पूरा entire जो है आपका shank part है. Okay, body. तो इसमें से आप देखो इतना part जो है ये आपका क्या है unthreaded part और ये जो है threaded part है. Right? This is also called a core part. अभी terminology बताऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा. तो ये जो है ये इसका क्या है threaded part है. और ये थ्रेडेड जो है इसके आउटर सर्कमफरेंशियल मींस सिलेंड्रिकल पोर्शन पे है. दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सटर्नल थ्रेड. व्हाट इट इज अ एक्सटर्नल थ्रेड. तो यहाँ पे ये हो गया मेंबर 1 आपका. राइट. दिस इज व्हाट मेंबर 1 दिस इज थ्रेडेड वन. नाउ सेकेंडली यू कैन सी हियर यहाँ पे जस्ट इसके बाद बगल में आप देखो ये रखा हुआ है. ठीक है. ये क्या है. दिस इज हैविंग होल. ओके बट होल के अंदर आपका थ्रेडिंग है. तो होल विथ थ्रेड. अगर होल है और उसमें थ्रेड है अंदर से तो ऐसे होल को हम बोलते हैं टैप्ड होल. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर. ठीक है. अगर ये यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है तो ये थ्रू होल हो जाए. यहाँ पे जो देख सकते हो आप टैपिंग अंदर दिख रहा है आपको हल्का हल्का. कैन यू सी इट. दिस इज व्हाट इंटरनल थ्रेडिंग. दिस काइंड ऑफ इंटरनल थ्रेड. एंड दिस इज योर मेंबर 2 and this member is called as nut. With the help of this bolt and nut, okay, with the help of this bolt and nut, we can form a bolted joint. Okay, so exactly what will happen here when this nut will be turned over this external threading, okay, along the cylindrical length of this bolt. It will exactly fit into this threading. Okay, तो दोनों क्या हो जाएगा exactly fit हो जाएगा. Okay. और फिर by applying a tightening force we will be creating a joint. Okay. ठीक है. ये tightening force कहाँ से मिलेगा हमको. The tightening force is nothing but obtained by a wedging action between the parts. Okay, which is having external thread and internal thread. Are you getting my points? So this is how the bolted joints can be formed. Okay, and then later if you want, whenever it is required, you can again क्या कर सकते हो उसको यूज करके जो भी है निकाल सकते हो डिसअसेंबल कर सकते हो. दैट्स व्हाई ये हमें जब भी चाहिए हम को बोल्ट के ऊपर फिट करके टाइटिंग फोर्स अप्लाई करके वी कैन फॉर्म अ बोल्टेड जॉइंट एंड लेटर देन वी कैन यूज इट एंड डिसअसेंबल. So without breaking or damaging forming or destroying a joint. Okay, so that's why this bolted joint is nothing but a best example of the temporary joints. Okay, now coming to the advantages and disadvantages of these types of joints. Okay, so if we talk about the advantage, so there are so many advantages. It is ease of handling. Okay, easily can be dismantled. Okay, and these are very popular and in almost all equipments nowadays, your electronics equipments or electrical equipments, we are using a nut and bolt fasten as a fastening. Okay, but if we talk about the disadvantage, okay, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या आता है कॉस्ट को लेकर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स. सी नाउ हियर मैंने यहाँ पे बताया इन दोनों को फिक्स करना पड़ता है. ओके, फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है tightening force apply करना पड़ता है. tightening is nothing but obtained by wedging action. Okay, but the cost of this fixing these elements to form a joint is more than the fasteners itself. Okay, and it is not an easy task. So that's why cost of these joints are very high. Okay, and thus it is advisable to use minimum possible threaded joints in any machinery. Okay, so as far as cost is concerned, cost is very high, and due to which it is advisable that you should avoid this. You should avoid the use of this type of joints on a large scale in any machine. Okay, तो इतना चीज क्लियर हुआ आपको यहाँ तक बेसिक चीजें थोड़ी सी. ओके ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो है
क्या है कि without this and without this you cannot form a bolted joints. Okay. तो अगर हम बोल्ट को कंसिडर करेंगे मेंबर वन, तो नट को हमको क्या करना पड़ेगा मेंबर टू, एंड also you can call nut is nothing but a complementary element of the bolt, without which bolted joints cannot be formed. So therefore nut plus bolt arrangement is very important, and the fixing of this nut and bolt arrangement, okay, is very important in any bolted joints, which is nothing but we can do with the help of lots of mechanical equipments like spanner and all. Okay. And while forming a bolted joints in here, the internal threads which we are using, okay, these arrangements we can use through hole also, okay, as well as tap hole, both we can use. So this is what the basic uh, idea about the bolted joints. Okay, clear है यहाँ तक? Any doubts? Hello. तो आपको इतना समझ में आया बोल्टेड जॉइंट्स कैसे फॉर्म होता है? हेलो हेलो. Yes, sir, no doubt. Yes. Yes, sir. Okay. Now next is the terminology part. Okay, एक मिनट. क्योंकि कभी भी डिजाइन करने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा. तो डिजाइन में बेसिकली क्या होगा, अब मैं आपको डिजाइन का मतलब बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, फिर हम टर्मिनोलॉजी बताएंगे. डिजाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी बता सकता है? आपका सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स. मशीन एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, नॉट एन इशू. बट अगर मैं बोलूँ डिजाइन, तो डिजाइन का मतलब क्या है? इजी इजी वर्ड में एनी वन ऑफ यू कैन टेल? हेलो, anyone can define this? What do you mean by design? See, design can be that thing which cannot have a absolute definition. अगर मैं बोलूँ इसका absolute definition बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है. Are you getting me? It can be defined in generic way. Generic way means what? Generic way means depending on the application. What? Depending on the application, which application is required, okay, and depending on the individual views or opinion. Are you getting me? Hello. So यहाँ पे जो हमारा concern है, our concern is about the mechanical design, and mechanical design is nothing but mainly concerned with मैकेनिकल डिजाइन का जो मेन कंसर्न होता है वो किससे होता है? आपका ट्रेसेस, बेरियर्स, ये जो है ये कीवर्ड्स है मैकेनिकल डिजाइन के. कोई भी डिजाइन बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट्स जो भी आपने डिजाइन किया है या पार्ट्स, उसको आपको ऐसे मीन्स ऐसे मेंटेन करना है दैट शुड
not fail, should not fail. Means to overcome the failures. Okay, to overcome the failures or the various techniques which are applied to optimize the what to optimize what you can say the cost and manufacturing of the components in order to maintain its life longer and it should not fail. Okay, so overcoming the failure is basically a design in simple word. Okay, तो जब भी हम डिजाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो there is not absolute definition, remember. Okay, similarly there are, depending on the application, the design may involve several steps. Okay, उसके steps होते हैं डिजाइन में, क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो सब आपको आई थिंक बताया होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तो उस स्टेप्स में हम प्रोसीड करते हैं. ठीक है, I hope you understood what is exactly the meaning of design. Okay, तो ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया. Okay, now coming to the terminology of the screw threads. Okay, तो स्क्रू थ्रेड्स में अभी आपको इतना पता हो गया कि थ्रेडिंग जो होता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है. ओके, नाउ अगर मैं बात करूँगा कैसे डायग्राम पे दिखाऊंगा आपको मैं एक बार यहाँ पे. ओके, तो refer to this diagram. Okay, with reference to this diagram I will explain my terminologies. This diagram, एक second. With reference to this diagram. Okay, you can see this PPT now. Hello. Yes, sir. Yes, sir. See, there are 10 minutes left, तो उसमें हो जाएगा. ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं. First thing, very first thing is about diameter. थ्रेडिंग का डायमीटर. ओके, जो हमें निकालना रहता है. ठीक है, सी डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स मींस व्हाट. आपको बोल्टेड जॉइंट्स के अंदर नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है, किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया गया है, वो सब सारा इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड यू नीड टू डिजाइन इट. Design of the bolted joints means you have to determine the size of the bolt. Okay, size of the bolt. So before determining the size of the bolt, you should know about the exactly what is the meaning of size of the bolt or what is exactly the size means. Okay, in case of threaded joints. So if you consider the size of the bolt or size of threaded joints, तो उसके अंदर आपको ये चीजें पकड़नी पड़ती है. क्या पहले आता है आपका मेजर डायमीटर. मीन्स आपको ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना है और उसमें से सारे पैरामीटर्स एस्टिमेट नहीं करने होते. That will be that discussion, that will be the part of some other discussion. Okay, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान दें. Then जो होता है नेक्स्ट आता है माइनर डायमीटर. Third comes your pitch diameter. Okay, you can note it down if you want. Fourth comes your pitch. Fifth is your lead. Okay, and sixth is your thread angle. At least you should know this. इतना तो आपको पता रहना चाहिए किसी भी थ्रेडेड जॉइंट्स के अंदर. एटलीस्ट मैंने बोला. ओके, बहुत सारा है इसके अलावा भी, बट एटलीस्ट यू शुड नो दिस. इतना अपने लिए सफिशिएंट है. ठीक है,
तो यहाँ पे मेजर डायमीटर का क्या मतलब होता है? ठीक है, मेजर डायमीटर वो डायमीटर होता है। सबसे पहले तो मैं डिफाइन करने से पहले आपको दो चीजें क्लियर करूंगा। ओके, यहाँ पे कि कोई भी थ्रेडेड जॉइंट अगर आप कंसीडर करोगे तो उसमें दो पार्ट। ओके, एक होता है ट्विस्ट पार्ट और एक होता है रूट। ठीक है, ट्विस्ट एंड रूट। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट इज नथिंग बट crest is a point corresponding to maximum material limit। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे थ्रेडिंग। ठीक है, ये दिख रहा है ना थ्रेडिंग एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ मैक्सिमम मटेरियल। so this is what crest। similarly the root is a point which is corresponding to minimum material limit। अभी आपको इसी डायग्राम के अंदर ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है। इज इट क्लियर? So this is what the root. This is again the root. Okay. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So if you know the crest and root, you can define the major diameter. What is major diameter? It is nothing but the diameter of imaginary cylinder। अगर आप ये देखो, ये जो आपके सामने डायग्राम है, it is nothing but अगर इमेजिन करो उसको तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है ना। इमेजिनरी सिलेंडर ये उसका सर्कमफरेंशियल पार्ट अगर कंसीडर करो, एक लेंथ है और इसका जो बेस है सर्कल है, तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है अगर रिवॉल्व किया सॉलिड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो थ्रेडेड पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है। ओके, तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट कंसीडर करेंगे तो इट इज डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। तो दैट डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर व्हिच passes through the crest। okay, what which passes through the crest is called as a major diameter or nominal diameter। This is true for external thread। क्या बोला मैंने? ये वाला जो है देखो, ये और यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ये एक्चुअली एक्सटर्नल थ्रेड का ही है। ठीक है, रखिए ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है दिस इज मेजर डायमीटर या आउटर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डी ओ। तो दिस इज इन केस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। लेकिन अगर आप इंटरनल थ्रेडिंग जैसे यहाँ पे है नेट के केस डेफिनेशन कंसीडर करोगे तो चेंज हो जाएगा। बट बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड अबाउट दी बोल्टेड जॉइंट्स। तो बोल्ट का ही साइज आपको पूछता है, नट का नहीं। तो बोल्ट के रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इफ इट इज इंटरनल थ्रेडिंग, तो इन केस ऑफ इंटरनल थ्रेडिंग the major diameter is that diameter which corresponds to the minimum material limit। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका, उस केस में केस तो ये जो ये वाला ये जो है कंफ्यूज विद दैट, वरना अगर आप भूल जाओ क्या रहता तो diameter is clear to maximum material the माइनर डायमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो। it is the diameter of माइनर। sometimes it is also called as a, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर डायमीटर, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज रूट डायमीटर। तो कोर डायमीटर और रूट डायमीटर इज नथिंग बट
DC it is here. Okay, it's not diameter which lies between these two. Okay, and it is actually इसका definition कुछ ऐसा होगा कि अच्छा माइनर डायमीटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा इंटरनल थ्रेड के केस में ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल। ओके, तो मैक्सिमम मटेरियल वहाँ पे क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनर डायमीटर है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेडिंग के अंदर जो डायमीटर आपका रूट से पास होगा वो। पिच सर्कल डायमीटर is nothing but a diameter of an imaginary window, okay, which will what and ये जो यहाँ पे दिख रहा है dp, okay, capital dp is which this part by this will be equal. Okay, means अगर ये ऐसा सर्कल पार्ट कंसीडर किया तो इसका इफेक्टिव similar point this point here. So next similar this point, the distance between this along the axis is known as ये तो इसके पैरेलल दिशा में यहाँ पे अगर ये पॉइंट चल गया यहाँ ये ठीक है। व्हाट इज द रीड थिंग अबाउट द डिस्टेंस अभी सपोज ये आपका बोल्ट है ओके ऑन दिस बोल्ट नॉट विल बी ये नॉट इस पे टर्न होगा ठीक है और ये नट क्या होगा इसके अंदर फिट होते जाएगा और ये डिस्टेंस ट्रैवल करता जाएगा यहाँ पे ठीक है और हर एक थ्रेड के ऊपर बैठता जाएगा ठीक है। So read is nothing but a distance that nut moves parallel to the axis of the screw. Okay, when nut is given 1 turn. So in simple language अगर मैं बोलूँ ठीक है, in simple language अगर मैं read को define करूँ तो कैसे define कर सकता हूँ? For single turn of the nut, the distance traveled by the nut along the axis. Okay, एक टर्न अगर आपने किया तो उसने कितना डिस्टेंस के ऊपर कवर किया, that is what we read. Okay. Then thread angle is what? The angle included between the sides of the thread, okay, which is measured in an axis. तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ, देखो ये साइड्स हो गया एक साइड हो गया ये थ्रेड का, ये दूसरा साइड हो गया थ्रेड का, ओके, and included measured in an axis. Are you getting it? So these are the basic things you should find out. Hello. Hello. No, sir. तो यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है? हेलो। So, So now for today we will stop here. In the next lecture I will be starting with the आगे का जो भी part है in the subsequent discussions we discuss. Okay, we will come design and tests which are induced in joints. Okay, to avoid the failures of the tool. Okay, what are the spaces induced during that? वो सब बात जो है डिजाइन से रिलेटेड एक्चुअल नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss.
So thank you. Let me take the attendance. Thank you, sir. I stop sharing my screen now. So you won't ask any doubt? No? No doubt, sir. So thank you. Now you may leave the meeting. I have taken the attendance. Okay. Thank you, sir. Happy Thank you so engineering. much. Thank you, sir.